Hi. So this video is going to be about first day gone wrong in Melbourne. You can watch the previous vlog to know my journey till Melbourne, and I think this is where we left off last time. So today is the 5th of March and I landed in Melbourne on the 22nd of February. So it's been like roughly 2 weeks and oh my god, so much has happened. I mean, like now I'm much chill about it. इतना टेंशन नहीं है उस बात का, मतलब है पर ऐसे इमीडिएट टेंशन नहीं है. बट yeah, man, so many things have happened. I've gotten scammed, I've gotten homeless, I have had so many breakdowns. But yeah, I'm just here to narrate all of that because मुझे लगता है कि like if anyone can learn from my experience then why not. क्योंकि जब आपको यहाँ आ रहा होगा या आप किसी की हेल्प कर रहे होंगे, like someone might be moving and all, तो it can be really helpful. Because I had a tough time trying to find resources and trusted resources जिनसे like I can rely on कि हाँ मतलब ये है वो है, थोड़ा वो trust build होने में time लगता है. तो that is why I am making these videos. So let's start from the beginning. हुआ ये है कि on the 22nd of February when I landed in Melbourne, a relative of mine, they were going to come and pick me up from the airport. And the plan was ki, they'll take me home, I'll freshen up and all, get some sleep and everything, and then they'll drop me at my accommodation which I booked from India. And then we'll go grocery shopping and they'll set me up and everything and I'll shift in. That was the plan. Original plan ye tha. Magar I landed in Melbourne and I think I hardly got any sleep for one and a half hour. Like I landed at around 8 o'clock in the morning. By the time I came home it was like 10:30, 11, and I tried to get some sleep because मुझे flight में बिल्कुल नींद नहीं आती है. I don't know, I just can't sleep. So I try to sleep a little and then I get texts from my roommate. So Ria texted me कि भाई you have to come to the accommodation. They will not give me the keys to the house, to the room before they will not give me the keys to the apartment before without you, and you will have to come and everything. And she's like at that place with all her bag and everything, so I couldn't afford to be late about all this. तो मैं जल्दी जल्दी फिर कुछ तो प्लान बनाया with my relative and I like मेरी जो भाभी थी उनके साथ, और उनके साथ फिर हम जल्दी जल्दी मैं सिटी गई very close to my university. मैंने ये accommodation book किया था because I didn't want to like waste more time in traveling and all. तो I was like कि ये पास में book कर लेते हैं and everything. Excuse me. हाँ, तो हम वहाँ गए और we like opening the apartment, and just then Ria tells me कि listen, the money that we were told was just the rent and there are no bills included. I was like what? So यहाँ पे कैसे होता है कि accommodation में you have some of the accommodations like the student accommodations जो होते हैं उनमें usually bills included होते हैं which includes your water, electricity, gas, Wi-Fi, and like electricity will also include obviously like your heating system and your AC and everything. So she tells me that it's not included and the Wi-Fi is also not there. So basically it was just the rent, and we both had a very fixed budget कि हमें इतने से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है. तो वी वर वेरी हैप्पी कि अरे वी फाउंड समथिंग वेरी क्लोज टू माई कॉलेज इन द बजट दैट वी हैड फिक्स्ड. सो वी वर लाइक सो हैप्पी अबाउट इट कि मतलब जो चाहिए था वो मिल गया. तो हम वी वर वेरी बम्ड अबाउट दैट. वाज लाइक अरे लाइक हाउ कैन दे do this, like we were told that everything is included but not. That's another story. So we go to the house, like we go into the apartment and like मतलब ऐसा होता ना एक एक करके सब बिखरने लगा. तो वी सी दैट द काउच इज देयर वेरी डर्टी, द कबर्ड लाइक द कैबिनेट्स किचन के वो सब ऐसे टूटे हुए थे, मतलब ऐसे गिरने को रेडी थे टाइप्स, एंड लूज थे मतलब फिटिंग्स. बाथरूम में बल्ब्स लाइट कुछ नहीं थी. मेरे रूम में बेड ही नहीं था. दे वर लाइक कि द बेड इज ब्रोकन and another bed will come in like 2-3 days. So there was just a mattress. Or because my room had a very small balcony and the AC unit was there, I think because of the water, all the tables that were in my room, like a study table and like a small table, उसका जो wood था वो सब खराब था. So it was all like
very weird, dirty. And the carpet was very dirty in the whole apartment. I mean, there were endless issues with that apartment, and I'm not trying to be like कि भाई मेरे ज़्यादा कुछ रहने के क्या कहते हैं, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ डिमांड्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मगर वो जगह में बहुत प्रॉब्लम्स थे, एंड फॉर द अमाउंट वी वर पेइंग वी फेल्ट कि दिस इज़ रॉन्ग. आई मीन इट वॉज नॉट अ लिवेबल प्लेस. हमें बहुत पैसा खुद से लगाना पड़ता उस घर में. So my bhaiya is like, you guys should not stay here. You guys are giving money for all of these things to be right and in place, and we'll get you your money back, we'll get you a refund, apply for a cancellation and this and that. Or मैं और रिया was so confused, like I have just landed and the first problem has already arrived. मतलब सांस लेने की तो टाइम दो. तो मतलब हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा था. रिया was also very blank and समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. शुड वी स्टे इन दिस अपार्टमेंट, शुड वी लीव दिस अपार्टमेंट, इफ वी लीव दिस अपार्टमेंट वेयर एंड हाउ क्विकली विल वी फाइंड एन अपार्टमेंट, न्यू वन. तो बहुत कन्फ्यूजन था. एनीवेज he sort of convinced us into, like my bhaiya sort of convinced us into leaving that place, which did make sense, but there was a lot of money that we had already paid for that place. So my money was stuck then. If we do the cancellation thing, it can take very long and that money will be stuck there for like a really really long time. But obviously that place was not livable, like it was very bad. So yeah, I mean we leave the place and then bhaiya bhabhi were like, listen, you guys come to our place now, wahan raho, आराम से रहो, and then spend the week trying to find new places and this and that. And I don't know man, उस समय दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था और ऐसे लग रहा था कि बस मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. ये इतना प्लान किया था, इतना सब सोचा था कि हाँ ऐसे ऐसे वील वर्क आउट एवरीथिंग, एंड देन बूम द फर्स्ट हिकअप, द फर्स्ट स्पीड बम्प केम थ्रू. तो मतलब फिर उसके बाद yeah, we went home. We were so quiet the whole ride. I had a little breakdown in the car. Even Ria's dad called her, and then she just like she had a little breakdown in the car, and I was just trying to keep some hope and stay strong. But हाँ मतलब अभी मे बी मैं नरेट कर रही हूँ तो आप लोग को बहुत ऐसे लग रहा होगा कि मे बी नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट, मतलब पता नहीं. पर हाँ उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब क्या, इसके आगे क्या, फिर मतलब कैसे होगा सब कुछ. कि न्यू प्लेस, न्यू सिटी, वी डोंट नो एनी, लाइक वी डोंट नो एनीथिंग अब, लाइक हाउ इट वर्क्स, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ फास्ट दे वर्क. और अपना इंडिया जैसा नहीं है कि मतलब तो फ़ोन घुमाए, कुछ जुगाड़ लगाया और कुछ हो गया टाइप्स. तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक. तो हाँ, वी गो होम, like try to cheer ourselves up and everything. And yeah, मतलब the next day then. So let me also tell you about the whole accommodation thing. So I booked my accommodation after a lot of research, which I did very diligently from my end, through like this company, you know, these agents that help you book स्टूडेंट अकोमोडेशन. तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे. तो उनमें से किसी एक, आई विल नॉट टेक द नेम, उनमें से एक एजेंट कंपनी के थ्रू मैंने अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करवाई थी. एंड दैट लेडी, लाइक दैट गर्ल टोल्ड मी that yeah all of this is going to be included in your rent. And my rent was just, so that place that I had booked, the rent for that was $250 per week, 250 Australian dollars per week. So you can calculate how much it is. And to get that place with all bills included in the city was now that I see it too good to be true, I think. मतलब उस समय तो हमें लग रहा था कि डूड हमने सही डील क्रैक कर दी, हमने बहुत we've been very smart about it and बहुत अच्छी जगह चूज़ की है. एंड everyone else is spending like $500-400 per week, हमें $250 में पूरा. So yeah, this girl told me that everything is included and we were like very happy. But yeah, I guess now that I see it, it was too good to be true. So anyways, तो like if I have to give you थोड़ा rough idea, तो $250 per week in the city is no, can't happen. अगर आप थोड़ा सिटी से दूर जाते हो, जैसे आप सबर्ब्स में जाते हो कहीं पे, तो हाँ इट इज़ पॉसिबल. मे बी फॉर अ रूम यू हैव टू गिव $250 पर वीक, या फिर उससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके घर में. डेफिनेटली हो सकता है, बट हाँ सिटी में तो नहीं हो सकता, ये मुझे समझ आ गया. सिर्फ रेंट शायद हो, पर देन अगेन आपके बिल्स वगैरह मिला के वो शायद पर वीक थोड़ा 300-320 टाइप्स चला ही जाएगा. ओके
तो yeah, then this happened on a Tuesday, 22nd of February. Then the next day is 23. So मेरे college का O week, the orientation week has started, and you know, things are full swing. Everyone is going there, and मैं और रिया रोज सिटी जा रहे हैं, like Wednesday, Thursday, Friday, ऐसे हम लोग रोज सिटी जा रहे हैं. We travel 1 hour to the city from their place, and we booked inspections. Like we are looking for like random. So update on second day is that we have found nothing. We have been kicked out of places because they're not open for inspection, and we are just trying out our luck literally everywhere. Riya, do you have anything to say? We are just homeless people rubbing our asses, find something. What is someone, in hopes of someone? We are mercy on disappointing us. ourselves. Have mercy. Oh, this building is so cool. Randomly just going to those student accommodations जो भी we see रास्ते में कि भाई do you have any rooms empty and what are your charges, what is included, and this and that. We've done like मतलब we would just go every day to the city and come back, and it just felt so hopeless. मतलब Friday तक तो हम बहुत hopeless हो गए थे कि क्या होगा. मतलब college is going to start from Monday. Both of us will have classes from Monday. So how are we going to manage this? Anyways, so हाँ मतलब social media and all पे I don't know if I was putting anything and all, but everyone was like, all my friends, everyone was like constantly asking me, how's it going? Are you liking it? And did you settle? And this and that. I'm like, guys, कुछ मत पूछो मुझसे, मेरे पास घर भी नहीं है अभी. My college is going to start. I was having so many breakdowns. Riya was having so many breakdowns, but I mean we were just there for each other. And हम पहली बार मिल रहे थे, हम पहले मिले भी नहीं थे कभी. We were just taking care of each other. और मतलब अब मैं ये बोल रही तो बहुत हल्की सी चीज़ लग रही है, पर उस समय में we were very like we were having major breakdowns every day. Like every day I've had a breakdown that week. Even till now, like it's like कि कोई चीज़ आराम से हो सकती है कि ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है फिर. तो हाँ मतलब फ्राइडे तक हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, रोज सिटी जा रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे कि भाई कुछ मिल जाए कहीं रहने को. तो ऑन फ्राइडे वी फाउंड दिस प्लेस. वी अंडरस्टूड, एंड बाय दिस टाइम वी अंडरस्टूड दैट जो हम बजट देख रहे थे उस बजट में हमें सिटी में कुछ नहीं मिलेगा इफ यू वांट टू स्टे क्लोज टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड देन यू हैव टू नेटवर्क, एंड बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में. तो यू वांट टू स्टे क्लोज टू यूनिवर्सिटी एंड यू आर न्यू, सो यू वांट टू मिनिमाइज द ट्रैवल ऑल्सो. तो हम ये समझ गए थे कि 250 में तो नहीं होगा, वी हैव टू लाइक थोड़ा हमें बजट इंक्रीज करना पड़ेगा अपना. तो वी गो टू दिस प्लेस ऑन Friday morning, and it's a beautiful, very nice property. The amenities were so good, the rooms were so clean and tidy. The rent was $393 per week for 1 year lease. So you have a contract of 1 year, and the rent was $393. I don't know man, like हमने ये बाद में बात की मैंने और रिया ने, but we agreed to taking that apartment. एंड वी लाइक आज ही बुक कर देंगे, आज ही पेमेंट कर देंगे ताकि हम वीकेंड पे मूव कर पाए, बिकॉज वीकेंड पे ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस सब बंद रहते हैं, लाइक नो वंस कमिंग टू वर्क, सो नथिंग विल मूव. एंड वी हैव क्लासेस ऑन मंडे, एंड दैट इज अनदर स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, बट आई विल कीप इट फॉर अनदर व्लॉग. आई थिंक ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो एनीवेज माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दैट ऑल्सो आई टेल यू इन अ सेपरेट वीडियो. तो हाँ मतलब हमें चाहिए था कि मंडे से पहले बिफोर आवर क्लासेस स्टार्ट वी हैव सम हाउस वी कैन सेट अप, किचन विचन थोड़ा सेट कर देंगे, रूम्स बाथरूम सब टाइम लगता है. तो वी लाइक हाँ ले लेते हैं, एंड वी लाइक फुल स्विंग ट्राइंग टू मेक पेमेंट्स. एंड मतलब वो अपने डैड को कॉल कर रही है, मैं भी पापा को फ़ोन कर रही हूँ कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. एंड वी ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, बट कोई तैयार नहीं था हेल्प करने को. तो बिकॉज ऑफ दैट वी वरंट एबल टू मेक द पेमेंट इन टाइम. एंड सो ऑस्ट्रेलियंस हियर आर लाइक दे विल नॉट वेट 1 मिनट एक्स्ट्रा. मतलब अगर उनकी शिफ्ट 4 बजे खत्म हो रही है, उनका ऑफिस 4 बजे खत्म हो रहा है, तो वो 4-1 तक भी नहीं रुकेंगे. तो मैंने बहुत उन्हें लाइक रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा रुक जाओ, लाइक 5 मिनट्स रुक जाओ, वी जस्ट ट्राइंग टू मेक ए पेमेंट. इट्स एन इंटरनेशनल पेमेंट, ऑब्वियसली इतनी जल्दी से एकदम इन अ स्नैप नहीं हो जाएगा, आपको बहुत डिटेल्स डालनी पड़ती है. एंड आई रिक्वेस्टेड देम अ लॉट, बट मतलब उधर ही मेरा तो ब्रेक डाउन हो गया था एकदम कि भाई वाई कांट थिंग्स जस्ट वर्क आउट लिटिल स्मूथली. तो मतलब मैं और रिया उसके बाद बहुत बम्ड थे, हमारा पेमेंट नहीं हो पाया था, तो हम मूव नहीं कर पाते. तो वी वर लाइक ठीक है, नाउ विल हैव टू अगेन कम ऑन मंडे एंड डू दिस होल प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द पेमेंट एंड एवरीथिंग. तो हम लोग मतलब बहुत डिसहार्टेंड हम लोग घर चले गए. वी वेंट होम, वी वेंट बैक टू आवर रिलेटिव्स प्लेस, एंड
या मैन आई थिंक हमने कुछ बात नहीं की ऑन आवर वे बैक. हम लोग इतने बम्ड थे, लाइक so disheartened and disappointed by people, disheartened because we didn't get a place. So we went back and मतलब वही रूटीन यूजुअल वो सब किया. देन सैटरडे वी वर लाइक थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि हम 4 दिन से इतना भाग दौड़ कर रहे थे. एंड गाइस ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप घर से उतरो ऑटो मिलेगा और ऑटो से चले जाओ. यू हैव टू लाइक रियली वॉक. सो सडनली गेटिंग एक्सपोज टू सो मच वॉकिंग, like you have to walk till the train station, then take a train, then go get down, maybe take a tram to your place. And so there's a lot of walking, and the frequency of the trains and trams is still okay, but of the trains and all is not कि मतलब हर 2 मिनट में ना मुंबई लोकल की तरह हर 2 मिनट में दूसरी ट्रेन आ रही है और आप चढ़ो और पहुंच जाओगे, ऐसा भी नहीं है. तो really have to do a lot of walking, so a lot of physical strength is needed. और हम वो हफ्ता एकदम से इतना ज़्यादा चल रहे थे, घूम रहे थे, वी वर वेरी एग्जॉस्टेड, प्लस ऊपर से इतना मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल इतना वो हो रहा था, तो मतलब बहुत थक गए थे. तो हमने सैटरडे को थोड़ा आराम करने का सोचा. एंड बाय सैटरडे नाइट लाइक बेसिकली रिया गॉट अ कॉल एंड देन थोड़ा उसका कुछ डिस्कशन हुआ किसी फ्रेंड से अबाउट ऑल दिस. एंड मतलब हम दोनों ने भी फिर उसके बाद बात की एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट वी हैड एक्चुअली गॉटन टू नम्ब अबाउट द फैक्ट, लाइक अबाउट पेइंग मनी. मतलब उस समय हम इतने डेस्परेट हो गए थे कि हमें कोई जगह चाहिए रहने के लिए एंड वी जस्ट वांट टू स्टार्ट विद आवर लाइफ एसएप एंड शिफ्ट इन एंड एवरीथिंग, कि हम सोच ही नहीं रहे थे कि अगर हम मतलब ऐसे हो रहा था कि हाँ देख लेंगे, हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे एंड रेंट निकाल लेंगे अपना. पर इफ यू एक्चुअली वी सैट डाउन टू डू द मैथ, इफ वी वर टू पे $393 पर वीक, हम हफ्ते में मतलब बहुत काम भी करते हैं ना एकदम, तो भी हम उतने पैसे शायद नहीं कमा पाते. और इवन इफ वी वुड हैव बीन एबल टू अर्न दैट मच मनी इन द वीक बाय वर्किंग पार्ट टाइम, वी वुडंट हैव सेविंग्स, लाइक very very low savings. So it did not make sense, and it did not slowly start to make sense to stay so close to uni, because I have classes only twice a week. I set up my timetable in such a way that I have to go minimum days to college ताकि मैं पार्ट टाइम को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ. तो मैंने इसी तरह से अपना टाइम टेबल सेट किया था कि मुझे सिर्फ 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़े. तो मुझे वही लगा यार 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, इतना पास रहना ज़रूरी है क्या, इतना सिटी में जहाँ सब इतना सैचुरेटेड है. मतलब वही मुझे भी रियलाइज़ होने लगा कि हाँ व्हाट शी सजेस्टिंग इज़ राइट, दैट मे बी वी शुड नॉट लुक एट दैट प्लेस. एंड देन हमें लगा कि हाँ अच्छा हुआ फ्राइडे को वहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज अगेन एन अनदर प्लेस आवर मनी वुड हैव बीन स्टक. सो देन मतलब Riya suggested that we move to this place where she had been living before. So Riya came to Australia, like Melbourne, almost like a month before I had arrived here. तो वो आ गई थी and then she had started part-time work and everything. So she was staying in this house in a suburb, roughly 1 hour 15 minutes away from the city. She was staying in a suburb here, and she was just paying $220 per week inclusive of all bills. And she called up that guy कि do you still have that room empty and all, and he said हाँ है, and but only one room is empty, and if you want to come you can come, and but you'll have to share a room and a bed and like the whole cupboard, basically the whole room you'll have to share. We realized कि ठीक है यार कर लेते हैं, because my relatives were going to go to India for a little vacation in the first week of March. तो हम उनके घर में से मूव करना ही था. We couldn't have stayed there for very long और कोई अकोमोडेशन भी नहीं मिल रही. तो दिस सीम्ड लाइक द परफेक्ट आइडिया टू जस्ट बाय आवरसेल्व्स टाइम. थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, शायद नई जगह ढूंढने के लिए, थोड़ा कस्टम होने के लिए टू द सिटी एंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स एंड ऑल. तो बस फिर संडे मॉर्निंग वी पैक्ड आवर बैग्स अगेन एंड वी टुक अ उबर बिकॉज इट वाज वेरी फार. वी टुक एन उबर, पुट ऑल आवर इतना सारा लगेज इन द कार एंड वी मूव टू दिस अनदर suburb which is like, so here is my city, here is my uni, this is where I was staying before, and then the place now that I've moved to is like right here. So it's like we traveled all the way. So this was also like 1.5 hours away from uni, but it seemed like a smart decision to make at that point of time, क्योंकि we would save on a lot of money and suburbs में maybe like job भी थोड़ा easily मिल जाए क्योंकि इतना saturation नहीं है. सबसे मेजर चीज़ है कि रेंट बहुत सारा बच रहा था अभी. ठीक है थोड़े टाइम के लिए यू हैव टू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स. आते ही सब कुछ मतलब वैसे नहीं हो सकता है शायद जैसे हाउ यू वांट इट. सो या दिस इज द रूम वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. इट्स अ हाउस, लाइक अ ड्यूप्लेक्स हाउस, एंड दिस इज वन ऑफ द रूम्स दैट मी एंड रिया आर शेयरिंग. तो
हाँ, it's so far it's good. It's like घर में जैसे रहना, सब लोग साथ में कुक करते हैं and everything. All the other people who stay in this house, all Indians only. But हाँ, I mean, it's not what it looks like on social media. अगर कोई ऐसे है जो अभी भी सोचता है that moving abroad is going to be all fun and games and it's just fun and हाँ मतलब वो I mean it is fun, but I'm waiting for the fun part to come. But there are a lot of hurdles जो you have to cross, and you have to literally stay strong every day. There are going to be 10 things on your list for the day, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी सारी होती है that you really have to give them time, और बहुत overwhelming है. मतलब I might be putting something on my Instagram which is just like 1% of my day, and it is usually मतलब it's just habit now. We only put the good parts of our life on social media, but हाँ, it is not like that. Moving abroad is no joke. I knew what I was signing up for कि it's going to be tough and all, but हाँ ये नहीं सोचा था कि मतलब पहले दिन आते ही इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी. We'll get scammed, that the place they showed in the pictures and in the videos वैसी होगी नहीं, then our money would get stuck, then I would go homeless, कोई घर ही नहीं मिल रहा है, then we would move so far, so many breakdowns. मतलब इतना कि you don't even have time to process that emotion कि भाई रोते नहीं बैठ सकते इस बारे में सोच के. You have to move on to the next problem, फिगर समथिंग एल्स आउट. 4 चीज़ें और पड़ी हुई हैं काम करने की. तुम्हें तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ग्रोसरीज लानी है, तुम्हें बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें होती है, पर हाँ इट्स नॉट ईजी. एंड आई मीन नाउ आई एम नरेटिंग इट वेरी लाइटली आई गेस, पर हाँ वो these 2 weeks have been a roller coaster ride, and I don't know what's to come आगे. Let's see, but I will try to keep vlogging here and there. I don't know when I'm going to put this video because time ही नहीं मिल रहा है इतना, पर I'll try to edit this ASAP and put it up there in the most unfiltered, candid way. Like yeah, I forgot to end that video because I had to get ready. We're going out. मतलब सोचा कि थोड़ा बाहर चले जाते हैं, weekend है तो we're going out, so I forgot to end the video. So I'll catch up with you guys like super soon. I'll try to be more frequent with my videos, not like I have a big audience, मगर I like doing this thing I guess. So I'll keep making more videos and see you.